I'm a singer-songwriter, a radio jockey, and a lyricist, a voiceover artist as well. I've released around 60-65 original singles in the last 5 years. I've written over 2,500 songs till date, and worked with Lata Mangeshkar ji and a lot of other people. So, how I started as a musician, okay? So, had a very humble beginning. I was born in Dharavi. My mother is sitting right here. We stayed for the first 4 years of my life. I lived in a little jhopadpatti, you can say, that's the slum language of Mumbai. So very humble beginnings. Then I saw my parents separate and all of that. Then they put me in a boarding school, in a military boarding school in Pune. So I was there for 7 years, and then I came back to Mumbai. And in school, since it was a military boarding school, we didn't have extracurricular activities. It was more of rappelling, swimming, horse riding, and stuff like that. Education had no importance in Pune. Of course, it's the education hub in the world, I would say. So, शुरुआत ऐसी हुई थी कि हमें साल में एक ही बार वेकेशन मिलता था 2 महीने का. तो जब मुंबई आता था तो रेडियो पे जो कुछ सुन लेता था वो सुन के दिमाग में चढ़ जाता था कि हाँ, दिस इज़ व्हाट वी हैव टू सिंग. So I went back to my 9th standard after vacation, and we had this inter-house competition, and we had to win the cup, and for that you need some points. कि ये जीत गया, वो जीत गया, poetry, prose, debate, horse riding, football, and all of that. So our house needed 2 more points, and एक ही competition बाकी थी जिसके tally होके एक cock house cup जो है दिया जाता है. So सबने कहा, Sameer, you're the prefect of the house. I belong to Indore house. So they said कि तू जा singing competition में, जीता नहीं जीता अलग बात है, let's at least go and participate. Otherwise we would get disqualified. So I went. कभी ज़िंदगी में गाया नहीं था stage पे, and I went, and I think there were 52 participants or so, and I sang that song which just came at that time. It was called Musu Musu Hasi Deo. You know that song? Musu Musu Hasi Deo. उतना ही आता था मुझको. So I went, I participated, I sang that, and I came 27th out of all the kids. So that was like the first, एक कहते ना कि नींव जिसको कहते हैं. उसके बाद again took my admission into Garware College in Pune again. वहाँ पे हमारे seniors आ गए पहले ही दिन. Like I was just unpacking, and I was in the hostel of the college, and I was unpacking and setting up my cupboard. So my seniors, जो 3-4 साल senior थे हम लोग, बोलते हैं जितने भी नए बच्चे आए हैं, just come. आज शाम को सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है कॉलेज का. जितने भी न्यू बॉयज़ हैं सबको हिस्सा लेना है उसमें. यू हैव टू पार्टिसिपेट, यू हैव नो चॉइस. सो 3 इडियट्स में आपने वो सीन देखा होगा ना, जहाँ पे सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं ऑडिटोरियम में उस जज के सामने, द चीफ गेस्ट के सामने. तो वैसे ही कुछ अलार्म था. वी हैड 50-60 कंटेस्टेंट्स, एंड जो भी स्टेज पे जा रहा है सब लोग उस पर हंस रहे हैं, कुर्सियाँ पटक पटक के हंस रहे हैं. So I was like, आज तो बैंड बजने वाली है मेरी करके. So I went on the stage, and उस वक्त एक गाना आया था, कल हो ना हो, हर घड़ी बदल रही है. And I went on the stage and I started singing. And I thought, अब जब मैं स्टेज पे जाऊँगा, everybody is going to laugh it out, like it's going to be very noisy and loud. And when I started singing, I hear pin drop silence. And I'm like, कि हो क्या रहा है, I can't hear anybody. I open my eyes after I finish the song, and I see the principal standing right next to me, on stage. वो पता नहीं आ गए थे बीच में. So he said कि you're winning, of course, today, and इसके आगे जितने भी हमारे कॉलेज की competitions हो गए inter college, you have to perform in all both and represent our college. The next part, what's the current music scenario that's happening lately? हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि यार आजकल के गानों में वो बात नहीं रही, जो पुराने रफ़ी साहब की शोर था. Of course नहीं रही. एंड उसके पीछे बहुत बड़ी वजह भी है. इट्स बिकॉज द कॉर्पोरेट सेक्टर एंटर्ड इनटू द म्यूजिक इंडस्ट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल, रीमिक्सेस का दौर शुरू हो गया. एंड सेकेंडली, सिंस 2000 टेक्नोलॉजी बिकेम सो ह्यूज दैट एनीबडी एंड एनीवन, वो एक मूवी आई थी ना, एनीबडी कैन डांस, वो एक्चुअली एनीबडी कैन सिंग पे भी लागू होती है वैसे. So until 2015 it was all okay. That's what I believe, that auto-tune came in, and a lot of people, troll करते हैं लोगों की auto-tune. But ऐसा नहीं है कि auto-tune हर किसी को सिंगर बना सकता है. वो लगाने के लिए भी आपको एक decent आवाज़ होनी बहुत ज़रूरी है. But उसके बाद जब corporate आया, then it became like a completely trending section कि उनको sign up कर लिया,
Then they released the song again. एक गाना आया था मनी के मगे हिते, काफ़ी फेमस हुआ था. A big label signed that singer up from Sri Lanka, made her sing in Hindi, destroyed the song, and that's it. Nothing. So basically, it's like a one-hit wonder kind of an era right now. Labels have completely destroyed careers of musicians using contracts that exploit the artist. I have been approached by a lot of big labels almost 7 to 8 times, and I have denied it. और एक वक्त ऐसा था जब when I was struggling to meet these people, I used to wait at their gates for 15 hours a day, you know, and they used to shun me out, कि निकलो यहाँ से, you know. And then since 2019, when I started promoting my originals and I started writing my originals, and they saw that the songs are coming on Spotify, number 1, number 2, and all of that. That's the time when they started approaching me that, you know, Sameer, we want you on board. We'll make you the biggest star in the world right now and all of that. We'll give you 15 songs every year, 15 big hits and all of that. एक गाना है, आप मुझे बताइए कौन से फिल्म से है ये गाना? समझ में आ गया? कौन सा गाना है? ऐ साला अभी अभी कैन क्लैप हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं हुई सुबह सूरज को मैं निकल गया रूबरू रोशनी रूबरू रोशनी है. ये गाना है. शामें मलंग सी रातें सुरंग सी बागी उड़ान से भी ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए तरा ता ता तरा ता ता तरा तरा ता ता तरा ता ता तरा ता ता तरा ता ता तरा तरा ता ता तरा ता ता तरा ता ता तरा ता ता तरा तरा ता ता 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 तरा ता ता. बहुत खूबसूरत गाना था बाय ललित के. आशियाना मेरा साथ तेरे हैं ना ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला आबुदाना मेरा साथ तेरे हैं ना ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला तू जो मिला तो हो गया मैं काबिल तू जो मिला तो हो गया सब हासिल. हाँ मुश्किल सही आसा हुई मंजिल. Everybody. क्योंकि तू मैं वो AI can't make such songs, I'm sure. Because to make such beautiful songs, we need human nuances into it, human emotions into it, and human touch to it. Now, इंसान रॉकस्टार का एक डायलॉग था ना कि तुझे दर्द चाहिए रॉकस्टार बनने के लिए. You've seen Rockstar? वो कहता ना you have to have pain in your life. That's true. As an artist, we all go through pain in life, of course. We have all been through heartbreaks and all of that.
बट आर्टिस्ट का थोड़ा सा अलग ही होता है यार. मेरा तो बचपन से ही था, सीइंग माई पेरेंट्स सेपरेट, देन मॉम गेटिंग पार्किंसंस at the age of 36, so it's been a tough task. And so पेन की कोई कमी नहीं है बॉस ज़िंदगी में. That's where a lot of music comes in from. But AI, the hot topic right now. I was just last month, I went for a recording of a jingle, a big brand, a big cricketing brand, basically. You can imagine, guess. So I said, okay, let's listen, let's record, because I had to go to the airport after that. So they're like, okay. I'm like, where's the composer? नहीं sir, कोई composer है नहीं, वो है track ready है. I'm like, oh, where's the lyricist? Sir, lyrics ready, आपको बस सुन के record करना है. I'm like, ओके. फिर मुझे आसरानी सर का वो डायलॉग याद, मुझे ये क्या क्या देखना पड़ रहा है टाइप से, एंड आई लाइक ओके लेट्स ट्राई. शायद ज़माना चेंज हो रहा है, वी हैव टू चेंज एज वेल. एंड आई रिकॉर्ड द ट्रैक बट आई डिडंट हैव द सोल. यू गिव अ प्रॉम्प्ट एंड आई एम लाइक, सो सिंस द लास्ट 25 years जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, वी आर गोइंग थ्रू सो मच, वी आर प्रैक्टिसिंग, वी आर डूइंग रियाज, वी आर डूइंग so much of rehearsals and all of that, so khatam. Like, it's a big question mark. And it's not only about music, it's about the entire world. पूरे दुनिया में आप देख सकते हैं कि लोग layoffs बहुत सारे हो रहे हैं. TCS and so many other companies are laying off because they don't need humans anymore. But जब एक artist के साथ ये होता है तो ये थोड़ा ज़्यादा दर्द होता है because it's unexpected. With music that is made by AI. Now the question is, even if they are making this music using AI, who holds the copyright to these songs? Is it owned by someone who gave the prompt? Ki, okay, make a nice Justin Bieber type dance song with bhangra into it. I'll just give an example. Who owns the rights? The label or the Spotify or the platform itself? It's a scary situation, right? And I'm sure 10 years from now, the new generation, they won't even understand the difference if the music that they're listening is made by humans, like humans, or AI. And ये music बंद कैसे रहा है? The AI is trained using the music made by real people. AI got trained with Michael Jackson's music, Led Zeppelin's music, Rafida's music, chords है ना? They just need a data. और जिसके ऊपर से music उठा के AI आपको सुना देता है. And you feel, oh wow, it doesn't sound real. So the question is, the artists are not even asked for permissions by the AI companies कि हम आपका music use कर रहे हैं हमारे AI को train करने को. Doesn't do justice, right? So should we be worried? Yes, I think we should be worried. But मुझे ऐसा लगता है the future belongs to those who are not against AI. I think the future is going to belong to only those who are with AI. And to win against this robot, to win against the AI, you have to be with AI and not compete with it. That's a sad fact. But मुझे लगता नहीं कि दुनिया rewind होने वाली है कि हाँ सब AI destroyed कर देते. It's not going to happen. So the upcoming generation is going to have a tough time, listening to music, making music. जैसे वॉकमैन और VCRs एक टाइम पे याद है, वॉकमैन और VCRs पे हम लोग म्यूज़िक सुनते थे, ब्लूटूथ पे, फिर आईपॉड आया. वैसे ही रियल म्यूज़िक कहीं ना कहीं रिप्लेस हो जाएगा बिकॉज द लेबल्स आर नॉट अगेंस्ट इट. एंड दैट्स द स्केरियस्ट पार्ट बिकॉज आर्टिस्ट, स्पेशली इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, दे आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग. दे आर डूइंग स्मॉल शोज, दे आर डूइंग व्हाटएवर. वो कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला, और गरीबी में ये सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं बेसिकली. बिकॉज आर्टिस्ट जो लोग म्यूज़िक बना के कुछ कमाना चाहते हैं, कुछ नाम बनाना चाहते हैं, दे हैव नथिंग लेफ्ट फॉर देमसेल्व्स. So it was labels first, and now it is AI. So it's a sad fact that we have to accept that it's going to be a death of commercial music in the few years. And sometimes I just feel, oh yaar, why didn't I, why wasn't I born in the 90s? And like थोड़ा सा पहले जन्म लेके उदित जी और कुमार सानू जैसे अब तक आके मैं थोड़ा सा रिटायर हो जाता, because they didn't have to make content and create content. Because today you have to be a singfluencer, like you have to sing and create content rather than focus on your music. Ki like karo, subscribe karo, share. These guys, they didn't have to do that. And that was the golden period. So, yeah, scary. But that's the future for you guys into music.
So much to talk, but I think we'll end it with a sweet song and take your leave. Let's do. आशाएं, होप, उम्मीद, ये उम्मीद की आने वाली जनरेशन अच्छा म्यूज़िक सुने, अच्छे से जिए और एआई से टकराए और अच्छे से अपने लिए एक मुकाम बनाए, उस लिए ये गाना। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो वार वार कर दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। You think AI can replace this? You imagine AI जब bands flooded होंगे Spotify, YouTube और हर platform पे, आप concerts किसके देखने जाओगे यार? But let's hope that the future is great, and as I said, future belongs to those who are with AI and learn something that AI cannot do and only you can do, right? So it's all white collar jobs in danger, but skills still I think would take centuries to be replaced. Thank you guys, this is Samir.